Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter number 1, Human Organ System. The first organ system is nervous system. Whenever a person gets injured on his feet while walking, he feels pain and his hand immediately reaches the injured site. Who asks the hand to reach the site? In fact, there is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinate body functions. This system is called nervous system. Now, human nervous system consists of two systems. The first one is central nervous system and the other one is peripheral nervous system. In central nervous system, we have brain and spinal cord. Look at here, human nervous system consists of central nervous system. We also call them CNS, means C means central, N means nervous and S means systems. So CN stands for central nervous system, which consists of brain and spinal cord. Next one is peripheral nervous system. P is peripheral and nervous and S system. So P and S stands for peripheral nervous system. The central nervous system is composed of brain and spinal cord, and the peripheral nervous system consists of a network of nerves which connect the central nervous system to the all parts of the body. Look at here, these all are nerves. These all are nerves, and these all nerves are known as peripheral nervous system, and they are connected to the spinal cord. Neuron or nerve cell. Neuron or nerve cell is the basic structure or functional unit of the nervous system. जो पूरा का पूरा nervous system है वो हमारे पास न्यूरॉन से बना है. All parts of the nervous system, brain, spinal cord and nerves are made up of neuron. So neuron हमारे पास एक functional unit है, starting unit है जो कि पूरे nervous system को बनाती है. Neuron transmit messages in the form of electrochemical waves called nerve impulses. Look at here, this is the structure of neuron or nerve cell. ये पूरा का पूरा हमारे पास एक nerve cell है और ये उसका structure है. The part of neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body. Look at this picture. This one is nucleus. ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस जो है वो किसमें फ्लोट कर रहा है? साइटोप्लाज्म में. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल के क्या बनाते हैं? सेल बॉडी बनाते हैं. इन सेल बॉडीज के साथ जो हमारे पास फाइन प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, ये फाइन प्रोजेक्शंस, इन फाइन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स. इनका मकसद क्या है? इनका सिर्फ ये मकसद है कि ये मैसेजेस पार्ट ऑफ बॉडी से लेती हैं और इस सेल बॉडी में इंटर करती हैं. द फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. अ लॉन्ग प्रोजेक्शन, विच इज अ लॉन्ग प्रोजेक्शन, ये है हमारे पास एक लॉन्ग प्रोजेक्शन जो इस सेल बॉडी से निकल रही है. इस लॉन्ग प्रोजेक्शन को कहा जाता है एक्सन. A long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called axon. क्या मतलब है इसका? कि हमारे पास जो यहाँ पे मैसेजेस आए हैं डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी में, वो मैसेजेस एक्सन लेता है और एक्सन ले जाके नेक्स्ट सेल को ट्रांसफर करता है. नेक्स्ट सेल मीन्स नेक्स्ट न्यूरॉन. टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सन ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल. और जो चीज इस सेल से दूसरे सेल में मैसेजेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है वो होती है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सन्स. नर्व. अ नर्व इज केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सन्स enclosed in a common sheet. Nerve transmit messages from one part of body to another. Types of neurons or the types of nerve cells. On the basic of their functions, neurons are of three types. First one is sensory nerve neuron, second one is motor neuron, and the third one is interneurons. Now sensory neuron carries nerve impulses from sense organ. हमारे पास sense organ कौन कौन से हैं? Ear, eyes, skin, टंग, नोज एक्सेट्रा. ये हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं और सेंसरी ऑर्गन से जो भी मैसेजेस होते हैं वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन लेती हैं और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजती हैं. हाउ?
Okay, sensory neurons carries nerves impulses from sense organs to the central nervous system. और central nervous system में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? हमारे पास brain और spinal cord होता है. वहां पे messages किसके थ्रू जाते हैं? sensory neurons के थ्रू जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स कैरीज नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टर्स. वो मैसेजेस जो इस वक्त हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ चुके हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, वो आफ्टर प्रोसेसेस मोटर न्यूरॉन्स लेती हैं और ले जाके अफेक्टर्स को प्रोवाइड करती हैं. अफेक्टर्स में हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं. द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड, जो उस मैसेज के बिहाफ पे रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं. नाउ इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारे पास जो थर्ड वन न्यूरॉन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उनमें मौजूद होती हैं और इनका काम क्या है? वो एक लिंक प्रोवाइड करती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में एक रिलेशन और एक लिंक पैदा करती हैं. दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. लुक एट दिस पिक्चर. ये पिक्चर हमारे पास पूरे इन तीनों न्यूरॉन्स के बारे में बताती है. कैसे? हमारे पास ये हैं डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या करते हैं? मैसेजेस लेते हैं सेंस ऑर्गन से. ये जब सेंस ऑर्गन से मैसेजेस लेते हैं तो ये मैसेज अपना ट्रांसफर करते हैं सेल बॉडी को. सेल बॉडी आगे से लॉन्ग प्रोजेक्शन एक्सन को वो ट्रांसफर करती है और एक्सन अपने टर्मिनल एंड्स के थ्रू नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं. अब ये नेक्स्ट सेल टू नेक्स्ट सेल ये हमारे पास मैसेज ट्रांसफर होता है और यहाँ प्रोसेस होता है मैसेज के ऊपर. और इस प्रोसेस के दरमियान क्या हो रहा है? वो इंटर न्यूरॉन्स जो है वो काम कर रही होती हैं और वो इस मैसेज को ले जाके दोबारा मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर करती हैं. मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो उस मैसेज को अफेक्टर्स तक भेजती हैं. Now the central nervous system. Now what is central nervous system? CNS. Central nervous system acts as a control center of the whole nervous system. It comprise brain and spinal cord. अब उसमें brain और spinal cord आता है. सबसे पहला जो है हमारे पास brain. First of all is brain. Human brain is enclosed in a bony skull called cranium and consists of billions of interneurons. It is divided into following parts. Look at this is the structure of human brain. Human brain is divided into 3 parts. ये 3 parts में divide हुआ है. First one is forebrain, next one is midbrain and the third one is hindbrain. Forebrain आगे 3 parts में divide हुआ है जिसे हम कहते हैं cerebrum, thalamus, hypothalamus. Cerebrum हमारे पास सबसे बड़ा पार्ट है. इस बड़े पार्ट के अंदर एक छोटी सी पार्ट है उसे हम कहते हैं थैलेमस और थैलेमस के नीचे एक छोटा सा पार्ट है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस. फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे हमारे पास छोटा सा स्मॉलेस्ट सा पार्ट है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के बाद हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन जो कि डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ ज्वाइन हुआ होता है. हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं हमारे पास सर्बुलम, बोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. Now let's start discuss about the forebrain. Forebrain is the largest part of brain. It consists of 3 main parts: cerebrum, thalamus and hypothalamus. Now cerebrum is the topmost and the largest part of the brain. It is divided into right and left cerebral hemisphere. Cerebrum controls many actions like thinking, feeling, emotions, seeing, hearing, perceptions, memory, speech, decision making, etc. Inside cerebrum there is a small structure called thalamus. It controls many sensory functions. Hypothalamus lies at the base of thalamus. It controls body temperature, hunger and thirst. Next one is midbrain. Midbrain is a small part of the brain which is present below the cerebrum. It receives information from sense organs which is then passed and on appropriate part of the forebrain. The last one is hindbrain. Hindbrain consists of the 3 parts: cerebellum, bones and medulla oblongata. First one is cerebellum.
lies under the back part of cerebrum. It acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movements. Pons is an oval structure present within midbrain. It controls many functions like sleep, swelling, equilibrium, and taste, etc. Medulla oblongata forms the posterior part of the brain where it is connected with spinal cord. Medulla oblongata controls heartbeat, breathing, and digestion, etc. Medulla oblongata keeps on working when rest of the brain goes to sleep. Now the next part of the central nervous system is spinal cord. Spinal cord is an extension of medulla oblongata. It runs backward inside the backbone up to its lower end. It is also made up of interneurons. Spinal cord creates a link between brain and different body parts. It also controls some reflex actions, immediate or involuntary actions, and some other involuntary actions. Now, peripheral nervous system. Peripheral nervous system or PNS consists of network of nerves which are spread in the body to connect all the body parts to the central nervous system, which is brain and spinal cord. The nerves which rise from the brain are called renal nerves. The nerves which arise from spinal cord are called spinal cords. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves in human body. Actions controlled by the nerve system. There are two types of actions. The first one is voluntary action and the next one is involuntary actions. So the voluntary actions, the body actions which are performed under conscious control, which are done after thinking over them, are called voluntary actions. For example, speaking, eating, reading, walking, running, clapping, etc. are voluntary actions. Involuntary actions, the body actions which are performed without involuntary of thinking process, are called involuntary actions. Involuntary actions are not performed under conscious control. Heartbeat, breathing, blinking of eyes, movement of small intestine, etc. are the example of involuntary actions.